Hello, class 8 students. You all are welcome in your social studies class. In today's class, we are going to study chapter number 1. But before starting the class, let me introduce you all myself. So, I am your digital mentor. With me, you are going to study all your chapters from your social studies book. Hope you all are doing well. You all are fit, fine, and healthy. So, let's start the first chapter from your SST book, chapter number 1, resources. आज बच्चों हम रिसोर्सेज यानी कि संसाधनों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. रिसोर्सेज नाउ मटेरियल in earth crust and its domains lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere ये referred होते हैं बच्चों as a resources. Lithosphere, so whenever there is word is lithos, it means it is related to land. Similarly, hydros, it is related to water, and atmos related to atmosphere, and bios. So all the combination where lithos, hydros, and atmosphere meet, it is your biosphere. So these are the important domains of our earth. रिसोर्सेज क्या है? रिसोर्सेज वो संसाधन है, वो साधन है बच्चों जिससे कोई भी कंट्री जो है वो प्रोग्रेस कर सकती है, प्रगति कर सकती है और मार्च फॉरवर्ड कर सकती है टू कम्पीट विद अदर नेशन. ये मीन्स ऑफ आर नेसेसरीज है फॉर सपोर्टिंग लाइफ, फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. आर्थिक प्रगति के लिए भी बच्चों रिसोर्सेज बहुत ज्यादा जरूरी है. देयरफॉर द स्टडी ऑफ रिसोर्सेज इन्वॉल्व्स मेन रिलेशनशिप्स. मनुष्य का क्या संबंध है बच्चों पर्यावरण से, एनवायरमेंट से, विच इज ओरिजिनल सोर्स ऑफ ऑल टाइप ऑफ resources. Here you can see here technological process old to new. पहले क्या होता था बच्चों? पहले हॉर्स ड्रॉन विद कैरेजेस. Here we have अब कार का प्रयोग होता है. पहले ऑयल लैम्प का प्रयोग होता था, अब इलेक्ट्रिक लैम्प का प्रयोग होता है. पहले वुड बर्निंग स्टोव का प्रयोग होता था, अब बच्चों प्रयोग हो रहा है माइक्रोवेव ओवन का. पहले हैंड सॉ का इस्तेमाल होता था, अब पावर सॉ का इस्तेमाल हो रहा है. फोल्डिंग फैन, एयर कंडीशनर, वॉशबोर्ड, वॉशिंग मशीन, नीडल एंड थ्रेड, swing machine, flat iron, electric iron. So almost most of the things they are running, all the devices they are running on electricity. Now how humans add value to resources? बच्चों अगर मनुष्य नहीं होंगे तो प्रकृति चाहे जितना रिसोर्सेज प्रोवाइड कर दे उस रिसोर्सेज को हम फिनिश गुड तक नहीं बना सकते. ठीक है. सो ये जो सारी चीजें हम यहाँ देख रहे हैं ये किसी ना किसी रिसोर्सेज से ही बनी और वो रिसोर्सेज हमें पृथ्वी देती है. सम आर फ्री ऑफ कॉस्ट बट सम आर इन लिमिटेड और in unlimited nature that we are going to discuss in this chapter. By the definition, anything we can use to meet and satisfy our need is a resources, and they are obtained from our environment either directly or by the application of human skill and technology. Human beings by means of their skills add value to resources which they need, and most natural resources become useful only when value is added to them. 4 types of value addition related to resources are economical, legal, aesthetic, ethical. Now this value addition brings the resources to usable or developed stage, and it is at the stage that resources command a price. For example, iron are such way may have no economic value to ordinary users, but when iron ore is changed into usable iron, it commands a price or becomes economically useful. Now Clean Air Act as an example of legal value attached to air, nature's free gift. An example of aesthetic value addition to a resource is a holiday resort, and people enjoy the beauty of a nature or wilderness only when they have a place to stay, rest and eat comfortably. बच्चों जो ethical value है refer करती है to a certain moral precepts, and man क्या है? Man regarded किया जाता है as a rational creature, और वो obtain करता है creation को moral prospect से, and he obtains certain virtues by living in harmony with natures as well as with other fellow beings. So sometimes even moral duty is put above the happiness. It is because ये responsibility है that man thinks of conservation of natural resources. Today बच्चों ethical value of resources is the great importance. So resources which have legal, ethical and aesthetic value उसे हम utilitarian resources बोलते हैं. क्या characteristics है बच्चों? क्या features हैं? This material can be called a resource if it satisfied the following conditions. So it can be transformed into a useful thing. It exists in sufficient quantity to be exploited for use. It has certain properties. So man can acquire technology and skill to use material as a resource only if he knows its property.
Now, factor affecting the use of resources. So, level of economic development and the quality of life depends on an efficient and wise use of resources. बच्चों कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं डेवलपमेंट एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज को. कौन कौन से हैं बच्चों? Here we have skills and technology. So the use on value of resources बच्चों ये डिपेंड होती है कि कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है और ह्यूमन स्किल का इस्तेमाल हुआ है. कॉस्ट इन्वॉल्व होती है बच्चों डेवलपमेंट, एक्सट्रैक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम द मोस्ट क्रिटिकल कंपोनेंट्स अफेक्टिंग द यूज ऑफ रिसोर्सेज. ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन भी बच्चों रिसोर्सेज का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. बहुत सारे एरियाज है ऑन अर्थ दे आर स्टिल इनएक्सेसिबल. सो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन कवरिंग द एरियाज. फॉर एग्जाम्पल Siberia and Russia has resources in plenty, but due to the lack of transport and communication, ये resources को it cannot be exploited. So it is the only recently that human settlement have come up in some parts of Siberia. Adequate deposits, so resources it can be exploited commercially only if adequate deposit they are available at a place. For example, iron ore deposit in Chota Nagpur, the area is exploited on commercial lines because there is adequate deposit and other required materials are available in that area. Industrialization, so industries make use of resources as a raw material and turn them into a useful product. कच्चे माल से बच्चों इंडस्ट्री जो है वो पक्का माल बनाती है. So developing countries lacking industrialization are use primitive methods and obsolete technology as well as worn out machinery and produce inferior quality resources that are quite expensive. ठीक है, तो ये डेवलपिंग कंट्री के फीचर आपको दिए गए हैं. Then we have time. So value of resources also changes with time. Resources की जो कीमत है, जो value है, वो भी समय के साथ change होती रहती है. If it does not change, it may make a resource redundant. For example, people in northern New England, USA used pine tar and tall timber for constructing houses to develop settlements. With the passage of time, these resources were used by the English Navy for ship building. Other factors like specialization, trade, international availability of motive power like electricity also affect development and use of resources. For example, a small country like Japan is today an industrial giant. Now she specializes in some chosen fields like motor cars and now in textiles too. अब हम पढ़ेंगे बच्चों टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. सो रिसोर्सेज ये क्लासिफाइड होती है डिफरेंट वेज बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड देयर क्लासिफिकेशन इज शोन बिलो. हियर वी हैव रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन एंड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. सो जो नेचुरल रिसोर्सेज दे आर रेन्यूएबल, नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज, ह्यूमन एंड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. हियर वी हैव स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस, क्वांटिटी एंड क्वालिटी, कंटीन्यूअस फ्लो. Here you can see the table, the proper flow chart is given to you. How resources are of two types. एक natural होती है, प्राकृतिक संसाधन होते हैं, एक human made resources होती है. प्राकृतिक संसाधन में बच्चों ऐसे resources होते हैं जो कि renewable होते हैं, जो continuous inflow है, जो कभी समाप्त नहीं होंगे. पानी है, water है, sunlight है, लेकिन कुछ ऐसे resources होते हैं जो समाप्त हो सकते हैं. Now human में we have structure and institution and quantity and we have quality. अब बच्चों एक और चीज है, नेचर में एक कुछ रिसाइकेबल सोर्सेज भी होते हैं और कुछ नॉन रिसाइकेबल सोर्सेज भी होते हैं. नाउ बेस्ड ऑन ऑरिजिन, जो रिसोर्सेज इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज. ह्यूमन बीइंग बच्चों वैल्यू करते हैं, ऐड करते हैं वैल्यू को नेचुरल रिसोर्सेज में. नाउ नेचुरल रिसोर्सेज बच्चों ये गिफ्ट है सभी के लिए जो हमारी लाइफ को यूजफुल बनाता है. ये इंक्लूड करता है नेचुरल वेजिटेशन, सॉइल, वाटर, एयर, मिनरल्स, इवन रॉक्स. And they can be of two type, biotic and abiotic. So biotic resources बच्चों ये क्या है, ये living resources है like forest product, crops, animal, birds, marine life. अब abiotic resources बच्चों these are the material resources or non-living things and minerals and power responses ये क्या है, ये अब abiotic resources हैं. Now these resources can be exhausted at excessive use it. अब बच्चों ह्यूमन रिसोर्सेज मनुष्य के संसाधन के बारे में पढ़ेंगे. सो ये ह्यूमन बीइंग है जिन्होंने वैल्यूएबल किया है ये सारी चीजें अपनी पढ़ाई से, ट्रेनिंग से, एक्सपीरियंस से और बहुत सारे तरीकों से दैट दे आर केपेबल ऑफ मेकिंग यूज ऑफ रिसोर्सेज एफिशिएंटली. सो ह्यूमन रिसोर्सेज डू नॉट merely mean the number of people living in area but how people possess, कैसे वो अपनी स्किल्स को, कैसे वो अपने गुण को, एजुकेशन को, कला को डेवलप करते हैं to other resources. So obviously too many human beings without adequate skill, education and training make a nation poor. अगर बच्चों बहुत सारे जो नागरिक होंगे, अच्छे से उनकी पढ़ाई नहीं होगी, अच्छे से स्किल नहीं होगा, तो वहां कोई भी डेवलपमेंट नहीं होगी और वो कंट्री गरीब हो जाएगी, पुअर कंट्री रहेगी और डेवलप नहीं कर पाएगी. Here we have wind energy जो कि रेन्यूएबल रिसोर्सेज है. चलो रेन्यूएबिलिटी के हिसाब से पढ़ते हैं बच्चों. सो टू टाइप्स ऑफ सोर्सेज है, रेन्यूएबल है और एक नॉन रेन्यूएबल है. सो रेन्यूएबल रिसोर्सेज कौन सी होती है? दैट कैन बी रिन्यूड बाय द रिप्रोडक्शन, उसे हम रेन्यूएबल रिसोर्स बोलते हैं. ये कभी भी खत्म नहीं होंगी. फॉर एग्जाम्पल वी हैव वाटर, फॉरेस्ट, सॉइल एक्सेट्रा.
ओके बच्चों, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जो एक्सॉस्टेबल इन नेचर है, ये खत्म हो सकते हैं. वी हैव पेट्रोलियम, गैस, कोल, अदर मिनरल्स. डू यू नो, क्या आपको पता है, द लेटेस्ट डाटा अवेलेबल इंडिकेट दैट द वर्ल्ड्स ऑयल रिसोर्सेज विल नॉट लास्ट बियॉन्ड द, ठीक है. सो वर्ल्ड के जो कुछ सोर्सेज है बच्चों, जैसे कि ऑयल रिसोर्सेज है, जैसे कि तेल है, पेट्रोलियम है, ये ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगा, इसका कंजर्वेशन और सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हुआ तो. बेस्ड ऑन देयर यूज, यूटिलिटी रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू एनर्जी रिसोर्सेज एंड रॉ मटेरियल. सो एनर्जी रिसोर्सेज, कोल, गैस, पेट्रोलियम, वाटर, पावर एंड इवन सर्टेन मिनरल्स लाइक यूरेनियम, दे आर यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी और एज फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स. रॉ मटेरियल बच्चों जैसे कि है मिनरल्स, वेजिटेशन, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, एनिमल एक्सेट्रा, फ्रॉम रॉ मटेरियल, ये रॉ मटेरियल फॉर्म करते हैं. एंड इवन कोल, गैस, पेट्रोलियम बच्चों ये भी यूज होते हैं एज एनर्जी रिसोर्सेज, मे आल्सो बी यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ केमिकल, फर्टिलाइजर एक्सेट्रा. अब बच्चों ओनरशिप, इनका हकदार कौन है, हु टेक द ओनरशिप. ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप बच्चों रिसोर्सेज क्लासिफाइड है चार तरीके से, इंडिविजुअल, community, then we have national, and then we have international. So these are the basic division of ownership. Individual resources, जब किसी की बच्चों खुद की व्यक्तिगत resources होती है, these resources they are owned by individual. Example है land owned by individual, family, group और people. So community, जब कोई community बच्चों वो करती है, ओन करती है, जैसे कि आपकी है सम अदर एग्जांपल्स हैं, जैसे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज आर पब्लिक लैंड, पार्क्स, प्लेग्राउंड एंड पंचायत घर्स इन अर्बन एंड रूरल एरियाज. नेचुरल रिसोर्सेज बच्चों रिसोर्सेज जो सरकार ओन करती है. पास में बच्चों जितने भी लैंड, वाटर, अदर नेचुरल रिसोर्सेज है, दे वर कंसीडर्ड टू बी ओन बाय द किंग. राजाओं के द्वारा होते थे, लेकिन अब सरकार पर उनका हक होता है. एंड सच रिसोर्सेज आर पब्लिक यूटिलिटी लाइक रिवर्स, रेलवेज, इरिगेशन, कैनाल्स, रोड्स एंड बिल्डिंग्स. देन वी हैव इंटरनेशनल रिसोर्सेज. सो ये रिसोर्सेज बच्चों ये ओन्ड है फॉर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन लाइक यूनाइटेड नेशन और अदर रीजनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस. सो बियॉन्ड द टेरिटोरियल वाटर, ओशन एंड सीज आर ऑफन ट्रीटेड एज ओपन. सो दीज ओशनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 किलोमीटर of exclusive economic zone belongs to many nations. For example, India can extract petroleum from the bed of Indian Ocean within the economic zone. Beyond this zone, it will have to seek the approval of international community to initiate such ventures as well as utilize the resources of the open ocean. Next, we have development of resources. So development of resources is produced in a stage. Even when the location of resources is identified, exploitation does not start and end all of a sudden. Some important stage in the development of resources are कौन से हैं, एक potential resource है, एक actual resource और एक reserve resource है. Very important point. Potential resource बस उसे हम बोलते हैं जिसमें total quantity of particular mineral and resources जो exist करता है nature में, such quantities are determined, जो हमें पता है कि वो इस particular quantity में है, उसे हम potential resources बोलते हैं. And actual resources वो resources होती हैं that have been surveyed and they're reserved properly determined for actual use. अब रिजर्व है बच्चों, सो ये एक ऐसा पोर्शन है ऑफ पोटेंशियल रिसोर्स का जो एक्सप्लॉइटेड है एंड डेवलप इकोनॉमिकली इन स्टेजेस. इट इज पॉसिबल टू कन्वर्ट अ रिसोर्स इनटू अ रिजर्व यूजिंग अ टेक्नोलॉजी. नाउ रिजर्व आर लाइक एक्चुअल डिपॉजिट फ्रॉम व्हिच विड्रॉल्स कैन बी मेड. नेक्स्ट, The development of these resources ये प्रोड्यूस होते हैं तीन स्टेज में, सर्वे में, माइनिंग में और ओर में. It is used in finding the location of the resources. It is followed by the exploration. Now the method of extraction of mineral resources from under the ground is called mining. Minerals or the ore combinations are found in beds or seams which are called ores. We obtain metals and non-metals from ore. Factors बच्चों जो contribute करते हैं the development of resources. So we have already studied about the factor affecting the use of resources. They contribute to higher economic growth by raising efficiency and enhancing the productivity. Factor बच्चों जो contribute करते हैं to higher productivity to economic growth, they are as follows. Now here we have human resources. So human resources, they are the most important ingredients. The development and the conservation of resources. और बच्चों ये होता है किससे, सिर्फ ट्रेनिंग की वजह से, नॉलेज, प्रोडक्टिविटी, बेटर हेल्थ, एजुकेशन, हायर एक्सपीरियंस of life at birth and human skill that we can make better use of the resources. टेक्नोलॉजी बच्चों, अगर टेक्नोलॉजी अच्छी रहेगी तो और अच्छे से रिसोर्सेज का हम यूज करेंगे. सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन, especially democratic institution like panchayati raj institution encourage worker at grassroots level to raise productivity. अब हमें stability and peace होनी चाहिए. Worker feel free to move around a peaceful environment और in absence of fear, uncertainty, जो workers हैं वो ज्यादा focused होंगे अपने काम पे. Free market economy, recent area में बच्चों India has gradually thrown market into international competition और ये expose करता है farmer and worker to the higher standard of work and raising their productivity. Then we have
कंजर्वेशन, कैसे संरक्षण किया जाए बच्चों रिसोर्सेज का. सो कंजर्वेशन डज नॉट प्रोहिबिट ह्यूमन बीइंग्स फॉर मेकिंग यूज ऑफ रिसोर्सेज, इज रेदर डिमांड मेंस फॉरसाइट टू यूज नेचर वाइजली. कैसे बच्चों जो नेचर, जो प्रकृति ने हमें फ्री गिफ्ट दिया है, उनका ह्यूमन बीइंग को वाइजली इस्तेमाल करना चाहिए ताकि नेचर को कोई हार्म ना हो और नेचर का बैलेंस ना बिगड़े. सो मेन एम ऑफ कंजर्वेशन है कि वाइल्ड लाइफ जो है वो इंश्योर रहे, जो वैरायटीज ऑफ प्लांट्स हैं वो इंश्योर रहे, स्पीशीज कोई भी बच्चों खत्म ना हो. As there exists close relationship between plants and animals, the environment in which they live, so they should be concerned for the health of the environment and also as a goal of conservation. बहुत सारे मेजर्स बच्चों लिए गए फॉर द कंजर्वेशन ऑफ अबायोटिक रिसोर्सेज. ये इंक्लूड करते हैं इनैक्टमेंट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, इन्वॉल्वमेंट ऑफ नॉन गवर्नमेंट organization, creation of specially protected areas like biosphere reserves, national park and wildlife sanctuaries, about which we shall learn later. Now the United Nations is also promoting international trade under the concept of globalization through the development of trade and commerce. Wide dispersal and judicious utilization of resources is promoted. Now, अब हम पढ़ेंगे sustainable development and the role of United Nation. So, United Nation बच्चों today ये concerned with many global issues on conservation. The Second Earth Summit was held in September 2002 in Johannesburg in South Africa. So, appropriately titled World Summit or Sustainable Development (WSSD), ये focus करता है on the economic development for the regeneration of resources. So, United Nations sponsored the first Earth Summit in 1992 at Rio de Janeiro in Brazil, and its theme was environment and development. The conference turned out to be the largest congregation of the world leaders of the history. और इसने रिजल्ट किया बच्चों some binding treaties to reduce pollution, की कम से कम प्रदूषण हो और to prevent from global warming, क्योंकि पृथ्वी जो है दिन पर दिन क्या होती है, गर्म होती चली जा रही है. So the concept of, very important concept, sustainable development was evolved and given shape at this conference. और इसने describe किया type of economic development which could ensure growth not only under present condition but future as well. The main principle of sustainable development, they are respect and care for all forms of life to achieve a dynamic equilibrium, improve and raise the equality of human life to remove present imbalance. जो natural ecosystem है बच्चों, it have enormous ability to withstand shocks and important to conserve the earth's vitality and diversity. ये essential है बच्चों to minimize depletion of natural resources. ओवरऑल बच्चों पैराग्राफ में ये कहना चाह रहा है कि जितने भी फ्री गिफ्ट्स है, जो नेचुरल रिसोर्सेज है, उसका सही से हमें इस्तेमाल करना चाहिए. सच एटीट्यूड्स एंड प्रैक्टिस टुवर्ड एनवायरनमेंट शुड बी चेंज एज दे आर detrimental to environment as well as our health and vitality. So local communities बच्चों उनको भी enable होना चाहिए to play participatory roles and take care of their environment. All these suggestions for effective planning of resources ensure sustainable development. हमारा main की aim क्या होना चाहिए बच्चों, sustainable development होना चाहिए. They also help to avoid or control some disasters like famine, disease and war. So the Convention of Biodiversity, it was signed at this conference. इस conference पे Convention of Biodiversity signed हुआ और इसने help किया the member nation including the India to evolve natural conservation strategy. Now, distinction between sustainable development and economic development. Here we have sustainable development or economic development. ये refer करता है बच्चों, it refers to a change in amount composition. It refers to exploitation of natural resources at a rate not above their own, and it is governed by demand and supply. समझ रहे बच्चों कैसे हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ना चाहिए. इट इज गवर्न बाय द कंसर्न फॉर द प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, एंड ये रिफर करता है सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन प्रोग्रेस को, एंड इट इज बेस्ड ऑन रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ. सो वी शुड बी following all kind of measure that lead us to the sustainable development of our environment, of our earth. Learn keywords from the chapter and also revise the important points from the chapter. That's all about this chapter बच्चों. ये जो प्रकृति है, ये जो पृथ्वी है, इसने हमें बहुत सारे free gifts दिए हैं जिसका इस्तेमाल हमें wisely करना चाहिए. That's all for today. Revise the chapter और मैं आपसे मिलूंगी आपकी next SST class में. Till then, take care. Bye bye.